हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग वाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उबंटू 22.04 LTS ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो सबसे पहले हम जान लें कि वाइन क्या है। वाइन इज ए compatibility layer software which is used for installing the software made for Microsoft Windows in Linux or Unix like operating system. Okay, so uh, the software which we cannot install or which is not available for Unix like or operating system or Linux operating system or Ubuntu operating system, that Microsoft software or Microsoft compatible software we can install through Wine. So today we will learn how to install Wine in our computer. So first of all we will open the terminal and then we will install the Wine software. So for opening the terminal, Control Alt T, we will press on keyboard Control Alt T. Okay, now sudo apt get install wine. Okay, this is the command also written here, sudo apt get install wine, and press enter. Password yes. Do you want to continue? Yes. Now the software will get installed in our computer. ठीक है, तो वाइन फ्रेंड्स एक compatible लेयर है जो कि Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं या जो गेम्स बने हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं है, उनको हम यहाँ पे वाइन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम वाइन जैसे हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए क्यू बेसिक सॉफ्टवेयर है, क्यू बेसिक को हम लोग इंस्टॉल करना चाहें अगर विंडोज वर्जन है, या फिर लोगो है, लोगो का हम लोगों को उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोगो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट लोगो नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। सिक्सटीन मिनट्स बचे हुए हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। ट्वेंटी 27% हो चुका है, हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा इसको 100% होने के लिए। 50% कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 82% has been completed. %97 completed. About 50 seconds left. 98%. Installation of wine take about 10 minutes. So we should have the patience. 100% completed. Now extracting the file, unpacking, and then it will be installed.
Now it has been installed. Okay. So how to configure the Wine? For that purpose, we will open the Wine. Control Alt T. Control Alt T we will press, and then we will type Wine CFG. Now Wine configuration window has been opened on the screen. Here you can select the version of the window. I have selected Windows 7. Apply. OK. And now Wine has been configured. Thank you very much, friends.